Hello learners, in this video I have given some words to describe a building or the mall and some tips to carry on your speech for 2 minutes. At the end I have provided some images with the explanation of that particular word. So hope you like this video. Watch till the end. Let's begin our video. Now I am going to discuss about the mall or particular building where you like to go again and again. Basically, many students get confused which building we have to speak about. So I suggest you all to speak about the mall because that is the building where we are having lots of things and lots of activities we can do, and you can describe that all so that your time limit can be conveyed. 2 मिनट्स आप प्रॉपरली बोल पाओगे सारे एक्टिविटीज़ को अगर वन बाय वन प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकोगे तो. एंड व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब द बिल्डिंग देन यू हैव टू स्टार्ट विद द एंट्रेंस से आपको स्टार्ट करना है कि बाहर से वो मॉल कितना ह्यूज है, कितना जायंट है, कितना अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, आई कैचिंग है, एंड व्हाई यू लाइक टू गो देयर. Then you have to start with the activities, what activities you like to do there. So very first thing is that when you are entering in the mall, you go there for the window shopping or for the shopping. Okay. Then after you can add that there is a big children's corner or game zone where lots of games are available and all the kids like to do and all the kids like to play games over there. Second thing is that there is a small cafe also which is having lots of good books, so senior citizens can sit over there and read the books and having a good coffee. At the same time, youngsters are going in the game zone or they are going for the movies or doing shopping. So children, small kids and children are also having entertainment over there, and at the same time senior citizens can also have good time over there. ओके उसके बाद अगर आपको 2 मिनट कम लगता है कि नहीं हो रही है, देन यू कैन ऑल्सो ऐड दैट देर इज़ वन टैटू आर्टिस्ट वेर आई लाइक टू डू द टेम्पररी टैटू ऑल द टाइम. सो वेन एवर आई विजिट देर आई ट्राई टू डू द टैटू ओवर देर. वन मेहंदी आर्टिस्ट ऑल्सो देर, सो माई फ्रेंड लाइक टू डू द मेहंदी in their hands. Another thing, there is one point where we can do the makeover of yourself. You can change your hairstyle or makeups and fashions and everything, which is very fascinating thing to do. So उसको भी बोल सकते हैं. Then after you can talk about the food courts. फूड कोर्ट्स के बारे में भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो. द फूड इज़ वेरी डिलीशियस. ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ cuisines are available over there. Then after you come to the movie where is you are talking about the multiplex. There are lots of different movie screens where you can watch English, Hindi or any kind of movies. Then parking facility or wheelchair friendly facilities are available. Escalators and lifts are available. Fire safety also taken care of. Security and safeguards are also there. So many things you can talk about and include in that things so that your 2 minute can be done properly. आपको हर एक चीज़ को एक्टिविटी वाइज प्रॉपरली डिस्क्राइब करते जाना है, तो उसके हिसाब से आपका टाइम लिमिट प्रॉपरली हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ कॉमन वोकेबलरी प्लस हाई लेवल ऑफ वोकेबलरी, ऑल्सो सम images I have given so that you can get the clear idea what is that things, what are those things, and you can speak your cue card. I hope this video is useful to you. If you find it very useful, please comment and tell me, give me suggestion. Don't forget to press like button and share it. So let's see what kind of cue card can be asked. Very first is describe a famous building or architect in your country or town. Second, describe a building where you live in. Describe a large construction you have seen. Describe a place where you like to go again. Describe the building you like to visit again and again. These all 5 cue cards can be spoken using these words. Okay, now let's begin with the words.
Very first, I have given the easy words which are most probably known by all people. So I'm not going to give you the explanation of those words, but at the ending part, some words which are required explanation, there I have given the definition and explanation. In between, I have provided the image also so that you can easily understand what that word means. Okay, so those image you can use in your Duolingo practice as well, because in Duolingo when you have to speak a word for the image, in that kind of question you will use these images also. Okay, so let's begin. For the first one is the billing counter, cash counter, sale, discount, purchase, price, out of stock, receipt, cashier, shelf, food court. Food court is a place where lots of food items, restaurants and outlets are there, so you can eat and having family time over eating there. Okay, next is smoking zone. Smoking zone is the area where you are allowed to do smoking. Next is parking. Scales. Scales here means the weight machine where you can do the weight of the product you have purchased. Credit cards, debit cards. Now till machine. Here I am going to give the explanation what is till machine. Till machine is a mechanical or electronic device for registering and calculating transaction at a point of sale. It is usually attached to a drawer for storing cash and other valuables. I have provided the image of it also. Okay, next is barcode. Most of the people are knowing what is barcode. A machine readable code in the form of numbers and a pattern of parallel lines printed on a commodity and used especially for stroke control. Basically it is for the quick identification. Okay, next is arcade. Arcade is a building that includes many shops and stalls. Basically in the mall we can see there are lots of small shops and outlets. Okay, next is trolley. Trolley is a cart used to carry goods in malls during shopping. Escalators, moving stairs where we don't need to move or climb, we have to just stand on a particular place and it moves automatically. Okay, changing room or fitting room where we are try out our clothes. Outlet, a shop that is one of many owned by a particular company and that sells the goods that the company has produced. Next is GST. GST's full form is Goods and Service Tax. Sorry. Now here I have provided some words which is very new and maybe you can use in your IELTS cue card or your Duolingo cue card also. So first is shopping spree, a short period of time in which someone buys lots of things. Here I have provided the example also. We went on a shopping spree as there was a big discount sale. Okay, छोटे से मतलब कम टाइम के अंदर आपको बहुत सारा शॉपिंग करना होता है. कई बार सेल लगता है कि वहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिया गया होता है कि 1 घंटे के अंदर आप जितना सामान खरीदोगे इसके ऊपर 30% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट्स है. तो उस टाइप का जो टाइम बाउंडिंग होता है उसको शॉपिंग स्प्री कहते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज़ द विंडो शॉपिंग. विंडो शॉपिंग बेसिकली हम विंडो के बाहर से चीज़ें जो उन्होंने डिस्प्ले पर रखी हुई है उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, डिस्कस करते हैं, बट खरीदते नहीं हैं. बेसिकली उसको विंडो शॉपिंग कहते हैं. हियर इन इंग्लिश, व्हेन यू स्पेंड टाइम लुकिंग एट द गुड्स ऑन अ सेल इन अ शॉप विंडो विदाउट इंटेंडिंग टू बाय एनी ऑफ देम. सिर्फ हम उसको देखते हैं पर खरीदना नहीं चाहते हैं. मे बी आउट ऑफ बजट है या उसकी नेसेसिटी या नीड नहीं है, तो सिर्फ बाहर से देखते हैं, उसको विंडो शॉपिंग कहते हैं. मैनी ऑफ द पीपल आर जस्ट डूइंग विंडो शॉपिंग इन द मॉल्स बिकॉज समटाइम्स इट इज़ आउट ऑफ बजट. ओके, नेक्स्ट इज bargain hunter. Bargain hunter is a adverb which is used for the person. ओके, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए बार्गेन हंटर वर्ड यूज हो सकता है. समवन हु इज लुकिंग फॉर गुड्स दैट आर वैल्यू ऑफ मनी, यूजुअली बिकॉज दे आर ऑन सेल at a lower price than normal.
नॉर्मल प्राइस जो होता है उससे कम प्राइस में अगर सेल में मिल रहा है तो दे आर जस्ट गोइंग टू शॉप, अलग अलग आउटलेट्स पे जाते हैं और कम दाम की जो चीज़ें मिल रही है उनको परचेज करते हैं, उनको बाय करते हैं। तो ऐसे इंसान को बार्गेन हंटर कहा जाता है। नेक्स्ट इज आई कैची आर्किटेक्चर। आई कैची आर्किटेक्चर जो आंखों को अट्रैक्ट करता है या बहुत अच्छा दिखता है उसे डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज होता है, द इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैचेज आवर अटेंशन। ओके, तो यहाँ पर आपको क्यू कार्ड अगर ये है कि द बिल्डिंग यू लाइक द मोस्ट और यू द इंफ्रास्ट्रक्चर यू लाइक द मोस्ट विच अट्रैक्ट्स यू, तो उस टाइम पे उसका आउटर जो साइड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो, आई कैची आर्किटेक्चर। सेकेंड वन इज इंट्रिकेट डिज़ाइन। इंट्रिकेट डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट प्रोबेबली, कि हमको पता नहीं चलता कि कहाँ से उसका रास्ता है और कहाँ से ऊपर जाना है, कहाँ से नीचे जाना है। बहुत सारे विंडोज़, बहुत सारे डोर्स होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड रास्ता जो होता है मोस्ट प्रोबेबली म्यूज़ियम ऐसे होते हैं, और बहुत बड़े मॉल्स होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं तो वो इस टाइप के होते हैं। तो इंट्रिकेट डिज़ाइन मीन्स कॉम्प्लिकेट, जो हमें कंफ्यूज कर देती है, having lots of small parts or details. Okay, next one is edifice. Edifice is large or impressive big buildings. बहुत बड़े एकदम इम्प्रेसिव टाइप के और लार्ज होते हैं वैसे बिल्डिंग को भी आप एडिफाइस वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड भी आप एडिफाइस का सिनोनियम के तौर पर यूज कर सकते हो, वेरी लार्ज और वेरी ह्यूज। ओके, उसके अलावा अगर आपको बिल्डिंग को डिस्क्राइब करना है तो यू कैन ऑल्सो से द वर्ड लाइक मेगा स्ट्रक्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मेगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। yes, you can also use the word wheelchair friendly, जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं या यू कैन से हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं, उनके लिए जैसे इजीली व्हील चेयर अंदर ले जा सकते हैं या उनको घुमा सकते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको व्हील चेयर फ्रेंडली भी कह सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी हैंडीकैप्ड वर्ड के जगह अगर आप स्पेशली एबल्ड वर्ड यूज़ करेंगे देन इट इज़ बीइंग मोर रिस्पेक्टफुल, और वो अच्छा वर्ड है हैंडीकैप्ड की जगह पर। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स यू कैन डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ देम। आप बिग मॉल को डिस्क्राइब कर सकते हो, म्यूजियम को डिस्क्राइब कर सकते हो। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द इमेजेस। दिस इज द इमेज ऑफ अ शेल्फ। अगर इसके ऊपर बुक लगी होगी तो वो बुक शेल्फ के तौर पे काउंट कर सकते हो आप। सेकेंड इज द एस्केलेटर। This is trolley, and right hand side is a till machine, and last one is the scale. Okay.